Viscosity is basically internal resistance offered by one layer of fluid to other layer whenever fluids move in layer. Okay, between these layer there is some friction, means one layer of fluid offers some resistance against other layer when these layer are in relative motion. This internal friction, this internal resistance is known as viscosity. This internal resistance or friction, we can say friction, इज नोन एज विस्कोसिटी. जब फ्लूइड मूव करता है, फ्लूइड की लेयर रिलेटिव मोशन में होती है, उस समय जो एडजेसेंट लेयर है, आसपास की जो लेयर है, वो एक दूसरे के मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑफर करती है. दैट फ्रिक्शन और इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज viscosity. This property, due to which this internal resistance is offered, this important property of fluid is known as viscosity. What we understand till now is viscosity. It is internal resistance offered by one layer of fluid to other layer. Whenever fluid are in motion, its layer are in relative motion, these layer offer internal resistance or internal friction. This important property, due to which internal resistance is offered by वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अदर लेयर, इज नॉन एज विस्कोसिटी. एक लेयर जब दूसरी लेयर के अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑफर करती है, इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. वी कैन सी वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लूइड moving over the flat stationary plate. Whenever fluid moving over flat stationary plates, this is velocity profile of fluid. Okay, velocity, what we can understand here is velocity is increasing in upward direction, in vertical upward direction. If velocity of one layer u, let us suppose velocity of this layer is u, then above this it is du. If I go small distance above, that is dy distance, then change in velocity is du. This change in velocity is due to viscosity, because there is friction. Upper layer offer friction against lower layer, therefore velocity of lower layer gets reduced and maximum velocity in upper layer. This is due to viscosity. Cause of viscosity. Cause of viscosity is due to intermolecular forces of attraction. They due to intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction. When fluid are moving, let us suppose this is upper layer. In upper layer velocity is more, therefore distance covered is also more. In lower layer velocity is less than upper layer, therefore distance covered is also less. This cause of viscosity is due to intermolecular forces of attraction between same molecules. We know that there are intermolecular forces of attraction that are known as cohesion. Due to this cohesion, when molecule try to go forward direction, but adjacent molecule try to attract it, due to cohesion, due to this there are some internal resistance, internal friction. This is reason of viscosity. Due to viscosity, there is some angular deformation. Let us suppose d theta. There is some angular deformation. Due to this angular deformation, there are shear stresses are induced in layer of these fluid. ये जो angular deformation हो रहा है, इसकी वजह से इन लेयर के बीच में shear stresses आएगी. इन लेयर में, इन फ्लूइड्स की लेयर में shear stresses आएगी, because we know that in shear stresses there are angular deformation. Okay, let us suppose two velocity profile, one is this and second is this. More the angular deformation is, lesser is the viscosity of fluid. More the angular deformation, lesser is viscosity, and flow is easy. Here friction is less, therefore this angular deformation is more. If this angular deformation is less, it means friction is more. It means viscosity is more and flow is not. Let us see an example here. In a jar there is water and in another jar there is oil. जब हम वाटर और ऑयल को किसी सरफेस के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर, स्टेशनरी प्लेट और एनी सरफेस के ऊपर गिराएंगे, तो व्हाट हैपन्स, देयर इज इजी फ्लो. वाटर, देयर इज smooth flow. In water flow is easy, in oil flow is not so easy, means it is more viscous and it is less viscous. Here angular deformation is more, and here angular deformation viscosity is more here and viscosity here less. Here friction is less, therefore flow is smooth here, and flow is easy. Here flow is not so easy because of friction is more here, means viscosity is more.
Next topic is Newton's law of viscosity. Due to angular deformation, there are some shear stresses which can be induced in fluid when fluid in motion. Okay, हमने पढ़ा जब फ्लूइड मोशन में होगा तो फ्लूइड की लेयर में shear stresses इंड्यूस हो सकती है. फ्लूइड की लेयर में shear stresses इंड्यूस हो सकती है. Let us suppose I have taken a layer which is distance y, which is in distance y from the surface. The shear stress, I can calculate shear stress here by using Newton's law of viscosity. What is Newton's law of viscosity? According to Newton's law of viscosity, shear stress at any layer which is y distance above the surface is directly proportional to rate of angular deformation. Is directly proportional to rate of angular deformation. What is Newton's law of viscosity? Shear stress at any layer which is y distance above the surface is direct. Shear stress at this layer is directly proportional to rate of angular deformation. Now we understand what is rate of angular deformation. Let us suppose two layer of fluid are moving. In upper layer velocity is u plus du and in lower layer velocity is u, and in dt time interval upper layer is moving du, upper layer is moving this distance more than lower layer. What is this distance? Okay, distance is velocity into time. Let us suppose velocity is here du, here velocity is u, here also u. Then what is velocity of this portion? Du into time dt. This is distance. In dt time, the distance covered by extra distance covered by upper layer is du dt, and this distance is dy, because we are calculating shear stresses in y direction, upward direction. If I calculate slope of this portion, then slope is tan theta. Tan d theta is equal to p upon b, that is du dt upon dy, because this theta is small, because dt theta is small. If theta is small, tan d theta is tan theta for small theta, tan theta is nearly equal to theta. So I can write here d theta is equals to du upon dy. If I have taken dt in left hand side, then it is in divide, then this is rate of angular deformation. D theta upon dt equals to du upon dy. This is rate of angular deformation. Now, according to Newton's law of viscosity, tau is directly proportional to rate of angular deformation, that is d theta upon dt, and we can say d theta upon dt is equals to du by dy. This is rate of angular deformation, means there is linear relation between rate of angular deformation and shear stresses. If यदि मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, दैट इज mu. This is dynamic viscosity or coefficient of viscosity. This is Newton's law of viscosity. Tau is mu du upon dy. If I plot graph between shear stress and rate of angular deformation or d theta upon dy, okay, then it follow equation of straight line, because according to Newton's law of viscosity, tau is mu du upon dy. What is equation of straight line? Y equals to mx plus c. C is 0 here. Okay, y is tau. In y axis what is here? Tau. Okay, in x axis what is here? Du by dy. And in place of m what is here? Mu. Means m is equals to mu. What is m? M is slope. Therefore slope of this curve, slope means tan theta. This इस curve का जो tan theta होगा, tan theta, that is m. Slope वो क्या होगा? Mu. Mu means dynamic viscosity. Dynamic viscosity is slope of shear stress versus rate of angular deformation. Now units of dynamic viscosity. SI unit of dynamic viscosity is Pascal second. SI unit is Pascal second, and CGS unit is Poise. Remember, SI unit is Pascal second and CGS unit is Poise. As per Newton's law of viscosity, dynamic viscosity is equals to tau upon du upon dy. Du upon dy. We know unit of tau shear stress is Pascal, that is Newton per meter square, and du means velocity. Velocity means meter per second. Okay, and dy, what is dy? Dy
means distance, dy is distance, unit of distance is मीटर पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर आ जाएगा, बचेगा क्या, पास्कल सेकंड, और पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड. दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड और पास्कल सेकंड. नाउ सीजीएस यूनिट, CGS unit, centimeter gram second unit is poise. Okay, CGS unit is in place of Newton there is dyne per सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा सेकंड. दिस इज नॉन एज poise, dyne per centimeter square second in CGS. Okay, dimensions of dynamic viscosity, that is mu. Dimensions of dynamic viscosity is m1 L-1 T-1. कैसे कैलकुलेट किया, तो करते हैं. कैलकुलेट यूनिट थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड. ओके, अब न्यूटन को मैं क्या लिखता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मीटर स्क्वायर नीचे था, फिर एक सेकंड था, है ना, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, बचा के केजी पर मीटर सेकंड. क्या बचा केजी पर मीटर सेकंड. तो केजी के लिए m1 है ना, एल मीटर के लिए -1, नीचे था T-1 डायमेंशंस. तो हम CGS में हम क्या लिख सकते हैं, और केजी पर सेंटीमीटर सेकंड भी लिख सकते हैं मीटर की जगह. विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली इक्वल टू 55.5 टाइम्स दैट ऑफ एयर, मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर is greater than dynamic viscosity of air. It is nearly 55.5% that of air. एक और टर्म होती है फ्रेंड्स, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. दोनों बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक और टर्म होती है फ्रेंड्स, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफरेंट देन डायनेमिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज बेसिकली इफ I divided dynamic viscosity by density, then the term which is obtained is known as kinematic viscosity. Kinematic viscosity is dynamic viscosity per unit density. अब इसका नाम काइनेमेटिक क्यों पड़ा, बिकॉज इसमें फोर्स का इफेक्ट नहीं आता है. हम ऐसा यूनिट देखेंगे ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड. हाउ, ये कैसे आई देख लो. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी. व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, केजी पर मीटर सेकंड. एंड व्हाट इज डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब. केजी से केजी कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. एंड इन सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. और ये जो सीजीएस यूनिट होती है इसी को हम बोलते हैं स्टोक. इसी को हम बोलते हैं 1 स्टोक. 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मीन्स 1 स्टोक, मीन्स CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टोक्स. डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर मीटर स्क्वायर मीन्स L2 पर यूनिट, टाइम मीन्स L2 T-1. ओके, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर. It is approximately 15 times that of water. Next topic is effect of temperature on viscosity. As temperature increases, okay, as temperature increases, viscosity of liquid decreases. Means inverse relation with temperature. Liquid, in liquid temperature and viscosity are inversely proportional, but in case of gases the temperature and viscosity are directly proportional to each other. Means with increase in temperature viscosity increases. How? Because in gases विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने मॉलिक्यूल रैंडम होंगे गैसेस के उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, है ना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, रैंडम, क्योंकि वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, रैंडम होते हैं. जितने ज़्यादा रैंडम होंगे उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट लिक्विड में हमने अभी देखा जो विस्कोसिटी है इट इज़ ड्यू टू कोहेजन. ओके, अगर कोहेजन कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी. क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ मॉलिक्यूल दूर जाते हैं. कोहेजन क्या, लिक्विड के केस में कोहेजन कम होता है. अगर कोहेजन कम होता है तो विस्कोसिटी भी कम हो जाती है. तो फ्रेंड
friends, this is it. Hope you like my lecture.